Yes, hello everyone. A very good afternoon. Yes, just give me the confirmation if I'm properly audible and visible to you all. Yes, Jai Hind everyone. Properly audible. Okay, all right. Okay, so yes, welcome to the class. This is class 1 MCQs. Okay, so we are starting with the MCQ series. Okay, right. So we will be discussing the MCQs, of course. We will be revising the concept along with it, and also we will going to revise whole of the important topic. Okay, suppose like today we are going to talk about digestive and respiratory system. Okay, right. So we are going to discuss questions on these two topics, the human digestive and the human respiratory system. Okay, and along with the MCQs, we will be revising the concept. And at the end, we will going to discuss the important points related to these two systems. Okay. So this is how we will going to, continue with our MCQ series. Okay. So in case you have any problem in any topic, in any, in any part of biology, please feel free to ask. Right. Okay. So yes, let's get started with the class. Before starting, let me tell you about the schedule for today. So the classes, they start from 9 a.m. Okay, you have this daily defense updates class. Then 10 a.m. you have daily current affairs. Okay. Then 9:30 a.m. you have this SSB interview live class. Okay. Then for the FCAT, the classes starts from 3 p.m. Okay. Then 4:30 p.m. and 5:30 p.m. So 3 p.m. पे आपकी स्टैटिक जीके की क्लास होती है, 4:30 पे इंग्लिश की और 5:30 पे मैथ्स की, right? For NDA, if we talk about the NDA classes, so 10 a.m. you have this maths class, okay, 11:30 polity, 1 p.m. biology, and 4:30 English, right? For CDS, 11:30 polity, 1 p.m. biology, and 4:30 English, right? So please do join the respective classes on time. Okay, so how is your preparation going? Yes. Any difficulty in any part? Yes, before starting with the MCQs, if you have any difficulty anywhere, let's discuss that first. Yes. All okay? Okay, so meanwhile, like we are discussing few topics every day, so you can ask your doubts, okay? Please keep practicing questions from your end, okay? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए. Which of the following enzymes is responsible for the digestion of proteins in the stomach? Okay, तो ये बहुत ही simple और basic question है, yet confusing at some times. Okay, so yes, please answer this. Amylase, pepsin, lipase or maltase? Digestion of protein in the stomach. Yes, can I get more answers? Okay, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. यस, सो द यस यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. ओके, यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर बी है, पेप्सिन है. ठीक है. व्हाई आई वाज सेइंग दैट दिस इज बिट कंफ्यूजिंग. यस, दिस इज बिट कंफ्यूजिंग बिकॉज आपको पता है कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होता है वो स्टमक में भी है एंड इट इज देयर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल. ओके, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्टमक की, तो स्टमक में पेप्सिन होता है, दी ओनली एंजाइम. लाइक अगर हम स्टमक में डाइजेशन की बात करें तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है. ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, राइट. नाउ ये जो अमाइलेज है, लाइपेज है, दीज आर दी एंजाइम्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, right. So pepsin is an enzyme. It is secreted by the gastric gland in the stomach that breaks down protein into peptides. Okay, so protein को ये peptide में break करते हैं simpler form में. So digestion is all about breaking the complex form into the simpler form. Protein जो उसका complex form protein है, okay, तो ये अपने simple form peptides में convert हो जाए. Okay, so pepsin is responsible for it. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम रिवाइज करते हैं. ओके, व्हेन वी डिस्कस दिस, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोपेप्सिनोजेन. प्रोपेप्सिनोजेन.
सो यू नो व्हाट हैपेंस इज ये जो पेप्सिन है ये प्रोपेप्सिनोजेन के फॉर्म में रहता है, लाइक इट इज इन द इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, ये एक इनएक्टिव फॉर्म में है, राइट। सो ये जो प्रो होल्ड ऑन, ओके। सो यस, सो यहाँ पे देखिए जो प्रोपेप्सिनोजेन है जो इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको जो HCl है ये इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, राइट, दैट इज पेप्सिन। और फिर यही पेप्सिन जो होता है इसका काम होता है कि जो प्रोटीन है उसको पेप्टाइड्स में ब्रेक करना। ठीक है, तो इसको भी हमेशा याद रखिएगा कि दिस इज द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ HCl। अगर HCl ना हो तो ये जो प्रोपेप्सिनोजेन है इनएक्टिव फॉर्म है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, राइट। एंड ऑल्सो प्रोटीन विल नॉट गोइंग टू गेट यू नो ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म पेप्टाइड्स। ठीक है, तो इससे हमने ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन? यस, बाइल का फंक्शन क्या है आपको बताना है। Function of bile in digestion. Okay, can I get more answers? Yes. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप तो एक तो देखिए तरीका होता है कि आपको जो आंसर पता है कि दिस इज द करेक्ट आंसर, आपने उसको मार्क कर दिया। बट आई हैव ऑल्सो डिस्कस द एलिमिनेशन मेथड विथ यू ऑल। ठीक है, कि बाकी सारे आंसर्स को सॉरी बाकी सारे ऑप्शंस को आपको चेक करना है। ओके, और देखना है कि कैसे ये गलत है, ट्राई टू एलिमिनेट देम एंड देन यू कैन गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हैं। ओके, बाइल का फंक्शन, यस। ओके, यस, द करेक्ट आंसर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओके, तो जो बाइल होता है इसका काम होता है फैट को इमल्सिफाई करना। इमल्सिफिकेशन का सिंपल मीनिंग है कि जो बिग फैट ग्लोब्यूल है इसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, एंड दिस इज हाउ इट विल गोइंग टू गेट absorbed by the lacteals present in the small intestine। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई भी होते हैं, माइक्रोविलाई। ठीक है, जो कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसको डाइजेस्ट करते हैं। और एक ये स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लैक्टियल कहते हैं, ये अब्जॉर्ब करते हैं फैट को। ठीक है, जो इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स है जो काफी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं उन्हें अब्जॉर्ब करने का काम लैक्टियल्स का होता है। ठीक है, सो बाइल इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। ठीक है, इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। इट हेल्प्स इन इमल्सिफाइंग फैट मेकिंग देम easier टू बी डाइजेस्टेड बाय लाइपेज। अब देखिए, फैट और लिपिड एक बात है। ठीक है, फैट और लिपिड, ठीक है, फैट और लिपिड इज द सेम थिंग। ठीक है, तो लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले को हम क्या कहते हैं? लाइपेज। तो दीज थिंग्स आर ऑलरेडी क्लियर टू यू ऑल, राइट? करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सॉर्ब्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट? अब्जॉर्प्शन का काम कहाँ पे होता है? स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ईसोफेगस? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? यस, यस। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हर एक जो ऑप्शन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, अभी हमने डिस्कस किया पेप्सिन होता है एंड इट विल गोइंग टू डाइजेस्ट द प्रोटीन, ओके, इनटू द पेप्टाइड्स, राइट। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे भी अब्जॉर्प्शन होता है बट वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट का नहीं, वाटर अब्जॉर्प्शन। और esophagus is the food pipe we all know, okay, and it is for the conduction of food। okay, यहाँ पे एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? वेव लाइक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यस, एनी आइडिया what is that wave like rhythmic contraction of the food pipe known as? Contraction and relaxation, yes. Yes, what do we call it? What is the term?
एनी आइडिया? Okay, so haven't we talked about peristalsis? Peristalsis. ठीक है, peristalsis आपने पढ़ा है? Yes or no? Yes, please tell me. पेरिस्टालसिस पढ़ा है, राइट? ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो देखिए, पेरिस्टालसिस आपने पढ़ा है। पेरिस्टालसिस ये पूरे एलिमेंट्री कनाल में ही वेव लाइक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है दैट प्रोपेल्स और मूव्स द फूड फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। ओके, नाउ न्यूट्रिएंट के अब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज करेक्ट। ओके, सो ये देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय, माइक्रोविलाय होते हैं दैट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। ओके, सो यस, यू कैन सी हियर लैक्टियल्स भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, दीज आर द लैक्टियल्स फॉर फैट अब्जॉर्प्शन। देखिए यहाँ लिखा भी है, इट अब्जॉर्ब्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके, राइट, सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर। Okay, try to answer this next question. The enzyme responsible for the digestion of starch in the mouth. Mouth में कौन सा एंजाइम होता है? Okay, so what is the other name for that enzyme, if anyone can tell me? What is the other name for that enzyme? Your answer is correct, very good. But what is the other name for it? Yes, okay. So the spelling is not correct, but yes. Okay, let me tell you. देखिए यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज होते हैं, इसको हम टाइलिन कहते हैं। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, ठीक है। सो यस, वेरी गुड, वेल ट्राइड। यहाँ पे देखिए जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, अमाइलेज, अब ये जो टर्म आया है अमाइलम, ये स्टार्च से है, ठीक है। और ये जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो जैसे फैट के डाइजेशन के लिए, लिपिड के डाइजेशन के लिए the enzyme is lipase. Similarly, for the digestion of the starch or carbohydrate, we have this amylase. ठीक है, अब जो माउथ में प्रेजेंट है वो सलाइवरी अमाइलेज है, ये आपको याद रखना है, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं। ओके, एंड इट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, अ पॉलीसैकेराइड, इनटू माल्टोज इन द माउथ। ठीक है, तो डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, एंड सबसे पहले जो डाइजेशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, स्टार्च का होता है। ठीक है, सो स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट। सपोज एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सबसे पहले माउथ में किसका डाइजेशन होता है, या माउथ में ही किसका डाइजेशन होता है, तो आपका आंसर कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, आपका आंसर स्टार्च हो सकता है। ओके, बिकॉज इट मीन्स द सेम, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन यू आर गेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। Which of the following hormones stimulates the secretion of gastric juice? Yes. Yes, try to answer this, everyone. I want answers from all of you. Okay. Okay, try to eliminate the options. Try to eliminate the options. सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। देखिए इसमें करेक्ट आंसर गैस्ट्रिन होगा। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ये जो है, these are these are secreted by pancreas. Okay, it has nothing to do with the gastric juice, okay, or the stomach, right? ठीक है, तो ये जो ग्लूकागॉन है, इंसुलिन है, इनका काम होता है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना। ओके, एंड दे आर बीइंग सिक्रीटेड फ्रॉम द अल्फा एंड बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। ग्लूकागॉन अल्फा सेल से रिलीज होता है और इंसुलिन बीटा सेल्स। ठीक है, पैनक्रियाज के हैं ये दोनों हॉर्मोन्स। ओके, अब यहाँ पे गैस्ट्रिन की बात करते हैं। गैस्ट्रिन इट इज सिक्रीटेड बाय स्टमक एंड इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड फॉर डाइजेशन। तो यहाँ करेक्ट आंसर गैस्ट्रिन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या होगा? यस, करेक्ट। ठीक है, हमें पता है कि स्टमक में जब
गैस्ट्रिक की बात हो रही है, मतलब स्टमक की बात हो रही है, ओके। सो स्टमक में HCl होता है और उसका pH इज 1.5 to 3.5, okay. So it contains this hydrochloric acid and maintains a highly acidic pH to activate pepsin. This we have already discussed, okay, how HCl plays a role in activating pepsin. No, D cannot be the answer. It's C only. ठीक है, देखिए यहाँ पे एसिडिक पीएच होता है स्टमक का, ठीक है। बाकी आप देखिए ये भी अल्कलाइन है, बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये भी न्यूट्रल है, ठीक है। तो हमें पता है एसिडिक इसमें से यही है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, राइट। एनी डाउट इन दिस? आई होप देयर इज नो डाउट। क्लियर, राइट, ओके, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट बताए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। Which of these organs is not a part of alimentary canal? इसमें से alimentary canal का part कौन सा नहीं है? Yes, ठीक है, ये हमने पढ़ा था जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे इन आवर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो एलिमेंट्री कनाल है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, इट एंड्स इन द एनस, ओके। और ये जो लिवर है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, दीज आर द एक्सेसरी ग्लैंड्स, ओके, लाइक दीज आर द एक्सेसरी ऑर्गन्स, यू कैन से, ठीक है। ये एलिमेंट्री कनाल का पार्ट नहीं है, एंड लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, राइट। सो लिवर एक एक्सेसरी ऑर्गन है, एलिमेंट्री कनाल का पार्ट नहीं है, बट इट हेल्प्स इन डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग बाइल, ओके। सो यस, दिस इज लिवर, ओके। नेक्स्ट इज द पैनक्रियाटिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन के लिए कौन सा पैनक्रियाटिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फैट डाइजेशन? देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं, आई हैव टोल्ड यू, जब भी आप ह्यूमन बॉडी पढ़िए, कोई भी सिस्टम पढ़िए, ठीक है, आपको ऑर्गन्स का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गन्स के जो फंक्शन है, ओके, उनका क्या रोल है, ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है उनका, वो आपको आइडिया होना चाहिए, बिकॉज मोस्टली द क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस, ओके। देन यू कैन गो थ्रू द डिजीजेस, द रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ओके। जैसे कि डाइजेशन में विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से भी क्वेश्चंस आते हैं, okay. If you look at the past year paper, question paper, you can easily see that there are questions from vitamin deficiency disorders. Yes, ठीक है, यहाँ लाइपेज करेक्ट हो गया, बिकॉज फैट के डाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। सो लाइपेज पैनक्रियास से सिक्रीट होता है, इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स इनटू ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। तो जो लिपिड है, जो फैट है, उसका सिंपलर फॉर्म क्या है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बताइए। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप ड्यूरिंग swallowing? जब हम swallow करते हैं फूड को, ठीक है, सो विंड पाइप के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रिवेंट करता है कि जो फूड है वो फूड पाइप में ही जाए और विंड पाइप में ना जाए। यस, व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर नोन एज? लैरिंक्स, एपिग्लॉटिस, यूवुला और pharynx? यस, ओके। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें, इसको समझ लीजिए। एक होता है गलेट, एक होता है ग्लॉटिस, ठीक है। सो फूड पाइप को हम गलेट कहते हैं, फूड पाइप को गलेट कहते हैं, और विंड पाइप को हम ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये विंड पाइप के ऊपर का कवर होता है, ठीक है, तो इसको हम एपीग्लॉटिस कहते हैं। आई होप नाउ दिस इज क्लियर, ठीक है, राइट। So this is epiglottis. It acts as a flap covering the trachea, that is the windpipe, during swallowing to prevent food from entering the airway. Because you know the food pipe and windpipe are side by side, as we have discussed earlier. Okay, so there is a lot more chances that while swallowing the food might get into the windpipe. Okay, so in order to prevent it, as soon as we start to swallow the food, the windpipe gets closed by this epiglottis, right? Okay, next is what is the function of large intestine in digestion?
लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है ये बताइए। Yes, it's absorption of water and electrolytes. Okay. See, I have included some basic question also. Okay, because कुछ question हमें basic और easy लगते हैं, but you know उसमें confusion की वजह से हम एग्जाम में उसे गलत कर देते हैं. Okay, जैसे अभी एक pH का था. Okay, हमें पता है कि स्टमक में HCl है तो acidic pH होगा, right? So it will be 1.5 to 3.5 only, right? So ये कुछ basic और simple questions हैं, but because of confusion we get them wrong. Okay. Yes, so absorption of water and electrolytes. So large intestine absorbs water and salt from undigested food and form the feces. Okay, right, the waste material. Okay, next is the main function of the alveoli in the lungs is. Lungs में आपको बताना है alveoli का main function क्या है? Oxygen transport, gaseous exchange, filtering dust particles or blood circulation. Main function of alveoli. Yes, ठीक है. तो चलिए ये बताइए फिल्टरिंग डस्ट पार्टिकल किसका फंक्शन है? फिल्टरिंग डस्ट पार्टिकल ये किस पार्ट का फंक्शन है? पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किस पार्ट का फंक्शन होता है टू फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स? यस. यस, नेजल पैसेज, करेक्ट. ठीक है, वेरी गुड. चलिए इसका करेक्ट आंसर गैशियस एक्सचेंज है. वेरी गुड. ठीक है, गैशियस एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है एल्विलाई में, एंड दिस एल्विलाई इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, आपको जैसा कि डायग्राम में भी दिख रहा है ये ऐसा बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है. ओके, और जितना भी पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपार्ट फ्रॉम द नेजल पैसेज, ओके, ऑल ऑफ द पार्ट लाइक okay, like the trachea, the bronchi, okay, the bronchioles, okay. So इन ये जो भी different parts हैं इनका function होता है to conduction, okay, like to conduct the air, okay. But यहाँ पे जो alveoli है it has a different function to perform this gaseous exchange or to promote this gaseous exchange, okay. So yes, alveoli, they are small air sacs where oxygen diffuses into the blood and carbon dioxide diffuses out. Right? Next question बताइए. The diaphragm contracts and move downward during. Yes. So ये question है जो थोड़ा सा confusing होता है. Yes. But we will going to discuss it, so there will be no more confusion. Okay. Inhalation, sure. चलिए. यस, इनहेलेशन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब इसके पूरे मैकेनिज्म को यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, देखिए होता क्या है जब हम इनहेलेशन मतलब टेकिंग द एयर इन एंड एक्सहेलेशन मींस गिविंग द एयर आउट. ठीक है, तो जैसे ही हम इनहेल करते हैं आप खुद सोचिए एयर को अंदर जाना है तो एक स्पेस क्रिएट होना चाहिए टू अकोमोडेट दैट एयर. ओके, तो इसीलिए जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है. ओके, राइट. डायफ्राम क्योंकि उस पर प्रेशर भी आता है बिकॉज एयर इज एंटरिंग इन, उस पर प्रेशर आता है, वो डाउनवर्ड जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है. ओके, राइट. और फिर एयर उसमें अंदर आ जाता है, राइट. अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है. ओके, एंड दिस इज हाउ द एयर गेट्स इन, राइट. एक्सहेलेशन में जस्ट ऑपोजिट, एयर को बाहर जाना है तो डायफ्राम फिर से लाइक अभी यहाँ पे इसमें डाउनवर्ड हुआ था, यहाँ ये अपवर्ड हो जाएगा बिकॉज अब एयर को बाहर जाना है. ठीक है, अब और स्पेस तो क्रिएट करना नहीं है, तो ये जो डायफ्राम है ये अपवर्ड हो जाएगा और ये रिलैक्स कर जाएगा, राइट.
in exhalation, right? So as a result of which यहाँ volume कम हो रहा है और pressure increase हो रहा है, okay? And this is how we exhale the air, right? So this is the mechanism of inhalation and exhalation. Okay, which of the following structures prevents food from entering the respiratory tract? Yes. Trachea, epiglottis, alveoli or pharynx. So it is the same concept but asked in different way. Yes. Right? Because yes, यहाँ पे epiglottis होता है, ये हमने discuss किया था. Okay, already. Trachea के ऊपर to prevent the food from entering the trachea. Okay, next बताइए, what is the normal breathing rate of a healthy adult at rest? Like when we are at rest, when we are not doing any exercise or, you know, yes. So what will be the normal breathing rate? Yes, like we are just sitting normally. 12 to 20. देखिए इसमें करेक्ट आंसर 12 to 20 है. करेक्ट, वेरी गुड. देखिए यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी रेट है ना, ये थोड़ा डिफर करता है. ओके, इट डू डिफर एज वी एज, राइट? ओके, तो आप देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी रेट इट डिपेंड्स ऑन दी साइज एक्चुअली. लाइक साइज की अगर हम बात करें तो जैसे व्हेन वी आर स्मॉल, ओके, जब हम 1 साल के या 1 साल से कम जो बेबीज होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 30 to 40 आप देख रहे हैं, ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट है. ओके, ठीक है, तो 1 मिनट में 30 to 40 ब्रेथ्स दे टेक. ओके, देन 1 to 2 years में 25 to 35, और 2 to 5 years में 25 to 30, 5 to 12, 20 to 25, ओके, एंड मोर देन 12, 12 to 20. ओके, बट जब भी आपसे कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा है, इट इज जस्ट आस्किंग यू यू नो अ जनरल breathing rate, so you will always going to mark 12 to 20. Okay, yes, it is asking about the healthy adult, so it is 12 to 20. Okay, next we will going to talk about the respiratory volumes पे जो questions होते हैं उसको चलिए discuss करते हैं. The amount of air that remains in the lungs after maximum exhalation is called tidal volume, residual volume, vital capacity or inspiratory reserve volume. देखिए इस पे जो क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, ठीक है, उसमें आपसे वैल्यूज नहीं उतनी पूछी गई हैं. ठीक है, आपको एक आइडिया होना चाहिए, नो डाउट. ओके, बट वैल्यूज से क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे गए, बट दीज डेफिनेशंस आर आस्क्ड. ओके, जैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा कि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, इनका वैल्यू क्या होता है, ये अभी तक आया नहीं है एग्जाम में. ठीक है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन किससे ज्यादा होता है, राइट? एक रफ आइडिया यू शुड हैव. बी. ओके, यस, रेजिडुअल वॉल्यूम. ओके, सो रेजिडुअल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. जस्ट अ मिनट. So I'm having a little bit cold, so pardon me for that. Okay. All right. So yes, we are talking about the residual volume. So जैसा कि इसका नाम है residual, okay, कि जितना भी आप फोर्स से एयर को बाहर करें अपने लंग्स से, ठीक है, तब भी कुछ एयर लंग्स में रह जाती है, उसी को हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं. ओके, और इसका एक सिग्निफिकेंस है, एक इम्पोर्टेंस है, अगर ये ना हो तो लंग्स कोलैप्स कर जाए. ठीक है, तो लंग्स का वो स्ट्रक्चर बने रहने के लिए दिस रेजिडुअल वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट रेजिडुअल वॉल्यूम है. ओके, यहाँ पे दिस IRV इज देयर जो कि 3 लीटर है. ठीक है, ये फ्रॉम दिस tidal volume is 0.5 liter. Okay, then this residual volume is 1.2 liter. और ये जो डिफरेंट जैसे वाइटल कैपेसिटी है, इट इज सम टोटल ऑफ IRV, TV एंड ERV. ठीक है, ये देखिए तीनों कलर्स इसमें ऐड हैं.
वाइटल कैपेसिटी में. सो इट इज सम टोटल ऑफ दीज थ्री. तो इस डायग्राम के थ्रू यू कैन हैव द रफ आइडिया अबाउट किसका वैल्यू ज्यादा होता है, किसका वैल्यू कम होता है, कौन किसका सम टोटल है. राइट. सो प्लीज गो थ्रू इट वंस. ओके. नेक्स्ट इज द primary side of oxygen exchange in the lungs is. Yes. Yes, it is the alveoli. ठीक है. तो देखिए इस तरह गैशियस एक्सचेंज होता है alveoli में. ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट. ओके. दे आर द tiny sac where oxygen and carbon dioxide exchange occurs through diffusion. Okay, what is the primary gas that stimulates breathing? Primary gas that stimulates breathing. Yes, what is the answer? ओके. सी, ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट यू कुड गेट इट रॉन्ग. ओके. देखिए इसमें करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है. देखिए होता क्या है, ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि किस गैस की वजह से, ठीक है, ब्रीदिंग स्टिमुलेट होती है. तो इट इज नॉट ऑक्सीजन, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. आप सबने ये बहुत ही कॉमन जो फिनोमिना होता है हमारी बॉडी में यॉर्निंग का, ठीक है, व्हेन वी फील स्लीपी यॉन. ओके. तो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है. सो दैट इज गोइंग टू स्टिमुलेट दिस यॉर्निंग का जो पूरा प्रोसेस होता है वो उसी की वजह से होता है, टू रिमूव द एक्सेस CO2 फ्रॉम आवर बॉडी. ओके. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के हाई लेवल्स ही हैं जो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं. ओके. इन द ब्रेन टू इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट. जैसे हम डिफरेंट रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, एरोबिक, एनारोबिक. ठीक है. तो आप याद रखिए कि जब हम कोई भी, जैसे हम नॉर्मली वी आर जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग. ओके. तो हमारा ब्रीदिंग रेट कितना नॉर्मल होता है. ओके. बट एज सून एज कि जैसे ही हमारा हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओके, राइट, या कोई हैवी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप देखते हैं ब्रीदिंग रेट इट इंक्रीजेस. ओके. तो वो इसलिए होता है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स आर इंक्रीजिंग इन आवर बॉडी. So in order to remove that excess carbon dioxide, the breathing rate is increased. ठीक है. ये पूरा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट. राइट. Stimulate means to start. Okay. So it stimulate, or it will going to it will going to tell the respiratory center. Okay. Stimulate का अगर आप normal words में बोलें तो it means to tell the respiratory center in the brain to increase the breathing rate. ठीक है. नाउ जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ा वैसे ही रेस्पिरेटरी सेंटर स्टार्ट कर देता है. ओके. लाइक देयर इज अ मैसेज सेंड टू द रेस्पिरेटरी सेंटर that now the carbon dioxide level in the body has increased, so please start increasing the breathing rate. Okay. Right. Any doubt in this? Clear. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. Which muscle plays a crucial role in respiration? Yes, which muscle plays a crucial role in respiration? Diaphragm, pectoralis major, biceps, trapezius. Yes, it's the diaphragm. अभी हमने डिस्कस किया कैसे इनहेलेशन एक्सहेलेशन में या इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में कैसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है to allow air intake during inhalation. Okay.
Okay, pectoralis major, it is a muscle, okay, right? So this is the muscle present in birds, okay, right? That helps in flight, right? Biceps. So these are the muscles only, right? These are the name of the muscles. Like, biceps be, this shoulder, this arm muscle, that is the bicep. Like, this is the bicep, okay? This is the bicep, and this is the tricep here, okay? Right. So these are the name of the different muscles. Okay, next is the condition where the airways become inflamed and narrow, leading to difficulty breathing is called what? Yes. ये देखिए disorder पे question है. So yes, देखिए इसमें करेक्ट आंसर एजमा हो जाता है, ठीक है. सो इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग मेकिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टी. ओके, लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे जो एयरवे है, एयरवे इज इट कुड बी द ब्रोंक्यूल्स और द ट्रेकिया, द ब्रोंकस. तो ये जो पूरा एयरवे है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग. इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग हो जाना, ठीक है, सूजन आ जाना. So that causes narrowing, okay, and that makes breathing difficult. Okay, so asthma is the correct answer. Okay, next is the respiratory pigment responsible for oxygen transport in the blood is myoglobin, hemoglobin, chlorophyll or cytochrome. Okay, we'll let you know. Yes, इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा इसको बताइए. Yes, it's the hemoglobin without any doubt. So hemoglobin, it is, it is present in the red blood cell. और hemoglobin एक iron containing compound होता है, ठीक है. रेड ब्लड सेल को रेड कलर का जो दिखता है वो रेड ब्लड सेल वो रेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस आयरन कंटेनिंग कंपाउंड हीमोग्लोबिन. ओके, इसका काम होता है टू बाइंड विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी. एक चीज और याद रखिए कि ये जो हीमोग्लोबिन है इसका काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का होता है मेजरली, बट थोड़ा सा ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट करता है. ओके, राइट. सो यस, सो हियर यू कैन सी red blood cell carries carbon dioxide back from the tissues to the lungs. ठीक है, तो these are the questions. Myoglobin, okay, myoglobin ये मसल में होता है, ठीक है, right? So this is myo means muscles, okay? So this is in the muscles and it helps in the transport only, right? The function is same, the name is different because yes, it is present in the muscles, okay? ठीक है, तो these are the questions, these were the MCQs for the digestive and the respiratory system. Let's revise the whole of the topic once again, okay, जिससे कि कोई भी जो हमारे concept है वो miss ना हो. Before revising this, any doubt till here? Yes. Okay, we'll let you know. So you must have got the brochure, right?
about it? Yes. ओके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में। देखिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स की, और जो पूरा मैकेनिज्म होता है होल टुगेदर। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, बी इट प्रोटीन, बी इट कार्बोहाइड्रेट और फैट, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, so that it could be absorbed by the body. Okay, right, to build the body। ठीक है, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, तो बॉडी की हेल्थ के लिए या बॉडी को बिल्ड करने के लिए न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, उनका अब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है। बट क्योंकि ये न्यूट्रिएंट ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अब्सॉर्ब नहीं हो पाते, सो उनका ब्रेक डाउन करना पड़ता है, और यही है डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल और फंक्शन। ठीक है, अब ये जो ब्रेक डाउन का काम है, ओके, उसको करने के लिए एंजाइम्स भी यूज होते हैं। डिफरेंट पीएच होते हैं पूरे एलिमेंट्री कनाल में, आपको पता है कहीं एसिडिक है, जैसे कि स्टमक में एसिडिक है, बाकी और सब जगह आपको अल्कलाइन, बेसिक, मीडियम, बेसिक पीएच मिलता है। ठीक है, राइट। ओके, अब एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो कि फूड को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। जैसे अगर हम एलिमेंट्री कनाल की बात करें, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड इट एंड्स इन द एनस। ओके, इस पूरे को हम एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। माउथ में डाइजेशन होता है, माउथ में टीथ है, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड्स है, तो उससे एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज निकलता है, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं। इसका फंक्शन भी हमने डिस्कस किया है, राइट। इसका फंक्शन होता है जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, उसको डाइजेस्ट करके माल्टोस में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। होल्ड ऑन। ओके, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद देखिए जैसे हम फूड को स्वॉलो करते हैं, फूड जाता है ईसोफेगस में। ओके, राइट, फिर ईसोफेगस का काम होता है कंडक्ट करना, और ये जाता है स्टमक में। ठीक है, स्टमक में पेप्सिन एक एंजाइम होता है, और यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सबका डाइजेशन होता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर है, उसका अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, लिवर, गॉल ब्लैडर एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, एंड ये हमने पढ़ा है, एमल्सिफिकेशन बाइल करता है, राइट। देन पैनक्रियास की बात करें, सो दे ऑल्सो मेक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट कर। ओके, so these are the structure and function। okay, okay, next we will going to talk about this part। देखिए ये आप you can go through it, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है। फेरिंग्स की बात करें तो इसको याद रखिएगा, फेरिंग्स एक कॉमन पार्ट है, एक कॉमन पोर्शन है, दैट कैन लीड टू द फूड पाइप ऑल्सो, टू द विंड पाइप ऑल्सो। ठीक है, जैसे सपोज एक कोई हाउस है, वहां पे एक हॉल है। ठीक है, अब उस हॉल से आप रूम 1 में भी जा सकते हैं, रूम 2 में भी जा सकते हैं। ओके, सो दिस हॉल इज फेरिंग्स। ठीक है, ये हॉल क्या है? फेरिंग्स है। सिमिलरली फेरिंग्स एक ऐसा कॉमन पाथवे है जिसके थ्रू आप फूड पाइप पे भी जा सकते हैं और विंड पाइप में। ठीक है, कॉमन पैसेज। So then esophagus we have discussed, stomach, small, large intestine, rectum. Okay, so it is a part of large intestine only. Okay, cecum, colon and rectum, last part where the waste products or the fecal matter is stored before elimination. ठीक है, उसके बाद एनस है। ओके, ओपनिंग थ्रू विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड। देन सलाइवरी ग्लैंड्स, अपेंडिक्स, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मींस अर्लियर इट वाज फंक्शनल, ओके, बट नाउ इट इज ऑफ नो यूज, राइट। Then liver is there, gallbladder is there, and pancreas is there. Okay, so these are the different parts। Okay, so there are two questions that you have asked। Okay, एक आपने मायोग्लोबिन पूछा था ना, मायोग्लोबिन चेस्ट। ओके, एक आपने ये पूछा था पेक्टोरलिस मेजर, सो आई हैव टोल्ड यू। देखिए पेक्टोरलिस में मेजर जो होता है चेस्ट का ही मसल होता है, बट बर्ड्स में ये विंग्स में डेवलप हो जाता है। ओके,
wings in birds, like these muscles are modified as wings in birds, but they are present in humans also. Okay, chest का मसल है. ओके देन आपने एक मायोग्लोबिन भी पूछा था, तो दिस इज जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन ओनली. ओके इट प्रेजेंट इन द मसल. ओके इट इज प्रेजेंट इन द मसल, क्योंकि मायो जो टर्म है ये मसल के लिए यूज करते हैं, और इसका भी फंक्शन होता है टू बाइंड ऑक्सीजन. ठीक है, राइट. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम तो सिंपल है. देखिए इसमें जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज द alveoli. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अदर्स आर जस्ट द कंडक्टिंग पार्ट्स. ठीक है, उसमें देखिए डिफरेंट स्ट्रक्चर के फंक्शन भी हैं, राइट. तो नेजल पैसेज में देखिए इट हैज दीज फाइन हेयर दैट फिल्टर एंड वार्म एंड मॉइस्चर इन द एयर, राइट. Pharynx is also, it will going to carry the air. Larynx will going to carry air and produces sound also. तो larynx को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें होते हैं वोकल कॉर्ड्स. वोकल कॉर्ड्स, और वोकल कॉर्ड्स का क्या काम होता है? वोकल कॉर्ड्स का काम होता है टू लाइक टू प्रोड्यूस साउंड. जैसे एयर, जैसे हम इनहेल करते हैं, एयर इट पासेस थ्रू द वोकल कॉर्ड एंड वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं एंड दे प्रोड्यूस द साउंड. ठीक है. Then trachea is the windpipe. Okay, then bronchi carries air into the lungs, and yes, so lungs have these alveoli, the air sac. Okay, that helps in the exchange of gases. Then the last part here is these respiratory volumes. ठीक है, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए. क्वेश्चंस इससे कम आते हैं, बट द बेस्ट थिंग इज डू नॉट लीव एनीथिंग. ठीक है, आपको कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, बिकॉज इन कॉम्पिटिशन यू नेवर नो, राइट, कि किस पार्ट से क्वेश्चन आ जाए. सो यू शुड ऑलवेज हैव द आइडिया अबाउट इट. तो यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं, ये आपको डायग्राम पहले ही बताया गया है. ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम ये डार्क ब्लू से है. देन 1 लीटर इज ERV. ओके, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 3 लीटर एंड TV इज 0.5 लीटर्स. ठीक है, तो ये एक डायग्राम भी इधर है, राइट. यस, सो एनी मोर डाउट इन एनी पार्ट? अब आपको कोई भी डाउट है कोई भी क्वेश्चन में, व्हाट ऑल वी हैव डिस्कस्ड? यस, एनी डाउट? Okay, so do you want this pattern only, like 20 MCQs plus the revision of topics, or more MCQs and no revision needed? Yes. Is this pattern suitable, or you want to change it? I can change it, okay, as per your requirements. Yes. ये pattern ठीक है कि 20 MCQs, or you want more MCQs to be discussed? This is good, right? Okay. So like हम ऐसा भी कर सकते हैं. We can include few more MCQs, but it's better to revise the concept. ठीक है, right? MCQs तो आपने already पहले भी करे हैं, यहाँ भी हम discuss कर रहे हैं, हम concept भी revise कर रहे हैं, right? But ये जो last में जो 5 to 10 minutes का जो पूरा topic का revision है, that will going to help you a lot. Okay, ठीक है. अब देखिए आपको कोई भी ह्यूमन बॉडी का टॉपिक पढ़ना है, आई हैव टोल्ड यू प्लीज गो थ्रू दिस, क्योंकि इसी के साथ हम रिवीजन भी कर रहे हैं. ओके, आपको भी रिवाइज करना है. तो ह्यूमन बॉडी में आपको ऑर्गन्स पढ़ने हैं, उनके फंक्शंस पढ़ने हैं. ठीक है, देन आपको पढ़ना है उनके मैकेनिज्म. ठीक है, कि डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, एंड देन द डिसऑर्डर्स. ठीक है, ये 4 टॉपिक आपको ह्यूमन बॉडी का पढ़ना है. उसके बाद आप एनसीईआरटी, यू कैन गो थ्रू दी एनसीईआरटी वंस. ओके, अगर आपको कहीं भी डाउट है, ओके, या कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, सो द नोट्स आर देयर एंड दे आर सफिशिएंट, बट यस यू कैन गो थ्रू एनसीईआरटी. ओके, उसके बाद आपको पता है पाथफाइंडर है, उसमें क्वेश्चंस आते हैं, आप उससे प्रैक्टिस करिए. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस करिए. ठीक है, राइट. सो दिस इज how you will going to proceed with it. ठीक है, right? So I hope this is all clear, right? Any doubt, any problem till here?
So I'm going to tell you that tomorrow we will. Okay, I tried to add 10 more questions plus the revision. Okay, if that works, that is fine. Otherwise, we can continue with 20. Okay, I think 10 more MCQs could be added. Okay, let me try for tomorrow. ठीक है, कल की क्लास में हम 30 MCQs and revision include करते हैं, right? और अगर if we are not able to solve all questions or revise, then we will stick to this pattern only, right? Hormones are very important. Hormones are very important from exam point of view. Yes. Okay. देखिए एंजाइम्स में डाइजेशन जो आपका टॉपिक है, ओके उसमें ही आपके एंजाइम्स आते हैं, राइट? तो उसमें आपको 3-4 एंजाइम है, राइट? बहुत डिटेल नहीं है इसमें, लाइक you will not be asked about chymotrypsin and all of these enzymes. It's just a simple pepsin, then trypsin, lipase, amylase, these are the enzymes. ठीक है, तो वो आपको एक आइडिया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन कौन एंजाइम कर रहा है और उनका सिंपलर प्रोडक्ट का क्या नाम है। ठीक है, सो हॉर्मोन्स जो एंडोक्राइन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट, इट इज लाइक मोर इम्पॉर्टेंट, बट आपको कुछ स्किप नहीं करना, राइट? Okay, so tomorrow we will be talking about two more systems. Okay, the circulatory and the excretory system. ठीक है, and I'm going to add 30 MCQs plus revision. Okay, let's see if that works. Otherwise, we will continue with 20 MCQs plus revision, right? So, yes. Okay, so let's end the class, right? If there is no more doubt. Please keep revising and please ask your doubt in the class, okay? Make best use of these classes. आप revise करते रहिए side by side, okay? And please ask your doubt if you have any, right? Okay, so let's end the class here. Thank you so much, everyone, for joining in. Yes, thank you so much. Okay, all right. Thank you so much for joining in. Jai Hind, everyone.